Hello guys and welcome back to my channel. My name is Basti. If you're new here, then please don't forget to check out my other videos and subscribe to my channel. And welcome to Diwalog 2020. दिवाली इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू साफ सफाई, है ना। और साफ सफाई तक तो ठीक है, लेकिन साफ सफाई के बाद घर को ठीक भी रखना पड़ता है। एंड ऑनेस्टली आई सक एट दैट. आई एम सो बैड एट कीपिंग माई स्पेस ऑर्गेनाइज. मतलब मेरा रूम मेसी रहता है, मेरा अलमारी मेसी रहती है, सब कुछ मेरा मेसी रहता है, जिंदगी भी. बट इन जनरल इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर मी टू स्टे ऑर्गेनाइज. मतलब इवन इफ आई ट्राई तो भी 15 से 20 डेज के बाद वापस वो सेम सिचुएशन हो जाती है. तो ओवर द ईयर्स आई सॉर्ट ऑफ पिक्ड अप सर्टेन ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आई स्टे अ लिटिल मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड लाइक मेरा कमरा थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज रहता है. आई एम स्टिल नॉट वेरी गुड एट इट, लेट मी टेल यू. बट ये मेरी कमी है, अब सब में होती है. एवरीवन हैज फ्लॉज. मेरा ये है, आई कांट कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड. But these are certain things that have been super helpful to me in staying organized. चाहे 15-20 दिन के लिए रखे, लेकिन रहता है. So I thought of sharing this with you. So the first thing is having like a designated place for everything. तो कुछ भी हो, from your phone charger to your glasses to say your shoes, सबकी एक डेजिग्नेटेड जगह है, सो दैट व्हेन यू आर टेकिंग इट ऑफ योर व्हेन यू हैव टू कीप इट, यू नो वेयर यू आर कीपिंग इट. इवन इफ आई एम नॉट बीइंग वेरी नाइस एंड कीपिंग इट राइट अवे, बट जब मैं सब कुछ हटा भी रही हूँ तब भी आई कैन जस्ट पिक इट अप एंड आई नो कहाँ जाते हैं. सो इट सॉर्ट ऑफ गेट्स इनटू योर मसल मेमोरी एंड उसमें उतना एफर्ट नहीं देना पड़ता इन keeping it away. The second thing is keeping your things in like boxes or baskets ऐसे. So even if the stuff inside the basket is not very organized and it's a little haphazard, but उसके बावजूद बाहर से it gives a clean look and it stays organized. And this has been a very nice tip that I have actually started following, not just for general random things but also for my clothes, because one of the biggest issues that I used to have is मैं कपड़ा एक निकालती थी, सारा गिर जाता है, and then यार बहुत आलस आता है टू फोल्ड इट एंड कीप इट बैक. तो उसमें इट इज़ रियली हेल्पफुल कि अगर मेरे पास बॉक्स है, आई कैन जस्ट टेक आउट द बॉक्स, टेक वन आउट, एंड चलो इवन इन केस आई एम बीइंग लेजी एंड यू नो कपड़ा मैं बस ऐसे रख दे रही हूँ, इट स्टिल इज इन अ बॉक्स. तो वो जो बहुत ही ज्यादा मिक्सड अप कबर्ड वाली जो सिचुएशन होती है वो नहीं होती है. द थर्ड इज दैट आई एक्चुअली पिक्ड अप रिसेंटली एंड आफ्टर आई एम जस्ट लाइक पहले क्यों नहीं सोचा. So मेरी क्या आदत थी हमेशा, I used to do that whatever I am keeping things, I used to keep them according to the type of thing they are. But for example, if you're talking about makeup, all my lipsticks together, the eye का stuff together, ऐसे ऐसे करके I used to organize. कपड़ों में सारे पैंट्स एक साथ, सारी टी शर्ट्स एक साथ, सारे टॉप्स एक साथ, ऐसे करके you know I used to keep it according to the type of thing that is, and mostly a lot of people do that. But instead of doing that, what I realized is, what if I keep it according to the frequency of how I need them? So for example, if I'm talking about earrings, I don't really use all these jhumkas and big earrings, statement earrings, या बड़े बड़े जो rings होते हैं वो सब, like heavy jewelry, I don't use it on a regular basis. But there are a lot of like small things like small tops, smaller jhumkas, hoops, ये सब है जो मैं regularly use करती हूँ. So in that case, what I started doing was storing all the things according to the frequency I used them. So now instead of taking out 10 things from 10 places and then making a mess out of it, all my 10 things are in one place and I can just take that out, keep that back together and just keep that. And that has actually helped me a lot. So in case you struggle with keeping things organized, I think you should definitely try this one out. The next point is something that I again discovered like a few months ago and it's been working out super well for me. It is cleaning your room or tidying up your room right before going to sleep. So now because रात को right before going to sleep I have a lot of energy. Like for me सुबह से ज़्यादा like I can do much more work at night than I can do early in the morning. So इसलिए रात को अगर सोने के पहले I am tidying up my room a little bit, तो इसके दो benefits है. First of all, when I wake up in the morning I see a clean and tidy room, it really makes my mood. Second thing is रात को energy है तो उतना time मैं दे सकती हूँ. Now
you don't have to do, like again as I said, deep cleaning, but हल्का फुल्का, like जो सामान जहाँ belong करते हैं वहाँ रख दो, कपड़े fold करके अलमारी में डाल दो, just do a little dusting and that's it. And उससे it makes such a huge difference. But as I said, मेरे लिए रात का time बहुत suit करता है, right before going to bed. So instead of just right before going to bed, you can choose any time of the day and make a routine उस हिसाब से. I would suggest that you do it like in association with some other thing you do, like नहाने के just पहले या नाश्ता करने के just बाद. Associate it with a daily activity that you do so that it becomes easier for you to form a routine. And the last and final thing is, first you need to accept कि तुमको cleaning करनी है कि नहीं करनी है. ठीक है, if you are just doing it because मम्मी को दिखाना है, या if you are just doing it because घर वाले डांट रहे हैं, तो you will never be dedicated enough to do it. But you know, you have to think कि हाँ, this is my place and I want to keep it clean. Until unless you have that motivation कि I want to keep it clean, वो होगा ही नहीं. वो मतलब 5 days, 10 days, 7 days उतने में खत्म हो जाएगा. You won't have the motivation to keep things clean, and that is exactly what happened with me. I'll tell you when things changed. I think 1.5 years ago, I had like an insect bite on my face. After that, I really sort of, I was like, नहीं वापस नहीं चाहिए मेरे को. और क्योंकि अगर रूम गंदा रहेगा तो कीड़े आएंगे तो इन्फेक्शंस होंगे. I had to care about my own health, and उसके बाद ही I could be a little more dedicated towards cleaning. I'm still not. I am being very honest. I still suck at keeping things organized, but फिर भी मेरे तरफ से कुछ एक effort तो जाता है at least. With that, we come to the end of this video. I hope you really liked this video and you found it helpful. If you did, then please don't forget to give it a thumbs up. Comment down below and let me know how you keep your things organized. Do you struggle with organization like I do or not? Are you a Monica? Please don't forget to share this video and subscribe to my channel. And I will see you tomorrow with another video. Till then, bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy.